Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे जी। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है गौरा। Thank you, Nikhil, and welcome, Udyan, to the program. A quick look at the headlines. India's GDP registers a growth of 6.1% in the January to March quarter. Index of 8 core industries rises by 3.5% in April 2023 as compared to the previous year. And key domestic indices log losses of 0.5%. Sensex finishes near 62,600 points. Nifty settles below the 18,550 level. जनवरी से मार्च की तिमाही में भारत की जीडीपी में 6.1% की वृद्धि दर्ज। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 3.5% ऊपर चढ़ा और प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक में 0.5% की गिरावट। सेंसेक्स 62,600 के करीब और निफ्टी 18,550 की स्तर के नीचे बंद हुआ। Market Mantra. और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष की चौथी तिमाही अर्थात जनवरी से मार्च के बीच 6.1% की राजकोषीय वृद्धि दर्ज की गई। समग्र रूप से 2022-23 के लिए सांख्यिकी मंत्रालय के अस्थायी अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% आंकी गई, जो दूसरे अग्रिम अनुमान 7% से 20 आधार अंक अधिक है। वर्तमान समय में तिमाही वृद्धि संख्या 6.1% पर है, जो अनुमानित 5.1% से अधिक है। उद्यन जी, इस तरह के जो आंकड़े हैं, खासतौर पे हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के स्तर पर देख रहे हैं, लगातार वृद्धि को दिखा रहे हैं और ये दिखाते हैं कि सरकार ने जो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सही ट्रैक पर प्रयास किए हैं, वो बिल्कुल सही दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये जो लोगों से एस्टिमेट लिए गए थे, अनुमान दिए गए थे, ये जो आंकड़े अभी निकले हैं, ये उन अनुमान से भी बेहतर निकल रहे हैं जी। तो लोगों का अनुमान तो था कि बेहतर होगा, जितना पहले अनुमान किया जाता उससे बेहतर आएगा, पर ये उन अनुमानों से भी ऊपर निकल गया। तो जहां तक कोई अगर सरकार या कोई और अगर ये कहता है कि जो कदम उठाए गए हैं उसका वैलिडेशन है, तो उससे आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता। पर जैसे कि हम जानते हैं, अर्थव्यवस्था जो है चलती ट्रेन या चलती गाड़ी की तरह है। तो आगे जो है, जो सिग्नल है, जो सड़क है, उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि वो इतना स्मूथ नहीं रहेगा, उसमें चैलेंजेस होंगे, पर हम उन चैलेंजेस से खरा उतरने के लिए हमारे पास वो सामर्थ्य, वो सक्षमता है। उद्यन, अभी अगर पीछे दौर में हम देखें, बीते समय में देखें, तो विश्व बैंक और मूडीज जैसी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना भरोसा जताया। इवन कि कई सारे देश भी ये बात अच्छे से मानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार बढ़ रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, वो तो अपनी जगह है ही। और ये आज का अगर फिगर्स है, जो आंकड़े आए हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जो एक ऑप्टिमिज्म है, जो एक आशावादी एक दृष्टिकोण है भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में, वो उसको दर्शा रहा है। आप देखिए, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, वहां पे एक बाउंस नजर आ रही है जी। और तो वो जो ऑप्टिमिज्म है, ग्लोबल एक ऑप्टिमिज्म है कि ये लार्ज इकोनॉमीज में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो वो उसको ये वैलिडेट करता है, वो उसको जस्टिफाई करता है जी। बट जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में अर्थव्यवस्था में एक डाउन टर्न सा आ रहा है, धीमी गति की तरफ जा रही है और हम उससे हम विश्व की अर्थव्यवस्था से हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो आयात हो
चाहे वो निर्यात हो। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल टॉप गियर में हमारी इकोनॉमी जा पाएगी, क्योंकि हमारा ग्लोबल लिंकेजेस है, पर हमारी इंट्रिंसिक आंतरिक जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे हम बाकी ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। Udin, you just spoke about the global economy and what is projected for the global economy. India's growth momentum is likely to sustain in 2023-24. The figures are good. They're looking good and also indicating easing of inflationary pressures. But, going forward, do you think economic activity can face the challenges, like you spoke of, an uninspiring global outlook? The RBI's annual report of 23 has also spoken about how do we keep the sustaining and the momentum of reforms up? Yeah, absolutely. When you cannot get into a runaway growth kind of a scenario, Gaurav, then reforms is a great way. If you cannot, you see that you cannot do it in the next 6 months, 8 months, 9 months, then you say, okay, I'm going to plan for the next 2 years or 3 years, so that when things are upbeat and they become buoyant, I'm in a position to exploit them. So that is, of course, there. And of course, there is no doubt that there are also intrinsic strengths that can get unleashed when you do reforms, right? So apart from that, the government, there's been a lot of infrastructure push that we continue to see in the news headlines every day. And that is something that if that push keeps happening, then you will find, whenever the buoyancy, overall global buoyancy comes in, that will, make our growth move onto a higher gear very seamlessly. The last but not the least, Gaurav, the important thing is that because of, cooling down, little bit of cooling down of prices, input prices, some of the growth that we have seen is possibly a result of that, because things, when we were in a very high inflation sort of scenario, not as high as in the West, but it was uncomfortable. From there, we have moved down, and that also helps, in economic growth. So those are some of the things that are helping us, and that should help us that should also be working for us as we go ahead, because we are not getting impinged by a very high inflation scene. It's still not great, but it's far, far better than where we were, and it's far better than in most other countries. Right. Appreciate this cautionary last sentence, because there is a gestation period between when inflation has struck its worst blow and then when inflation cools down, prices cool down, till when it actually gets felt on the ground, whether it's industry or in household incomes. Do you think that by next year we would be able to reap that benefit also, and that's a positive thing? Oh, absolutely. I'm very, very sure. It's not going to be a trampoline kind of a growth, you know these trampolines when you keep the kids jump and they bounce up. So it's not going to be a trampoline kind of a growth where you suddenly shoot up, do a vertical takeoff. Right. It'll move up. It'll be much better. And then the subsequent year, it'll be much better. But one of the interesting things, there was a couple of lines that have come out from RBI from their annual report, where they're saying that they will not be surprised if some of the estimates are overshot. Now, if today's figures are what they are and what we are seeing, then somebody in RBI or the government can actually argue that we are seeing an upside. If they argue that there's an upside to some of the numbers, then it's very difficult to argue against them, and there are already experts who are, after seeing the first flush analysis, they are saying that there is a little bit of room, that even if you're thinking that the rate, growth rate may not be as brisk as the last financial year, the next year, but still there is a room for upside, because these latest figures are showing an upside. So which is very, very rare at the moment. Globally, we have to appreciate that point. Globally, if you look around, even in the most advanced economies, nobody is saying that, there's an upside to the economic growth to their, in their country. You can revise it upwards, the estimates. It's only here in India that's happening. And that, I think, is a standout feature of today's, this development, the data that's come out and the way people are reacting. So we know that many cohorts and many sectors and ministries and economists have worked to bring us to this stage.
But do you think that it's basically been a very prudent monetary policy that we've followed? What do you think have been the primary contributors to actually reining inflation in and anchoring us? Yeah, that's a very good point. And when announcements were made in the West, if you remember, if I take you back about 3 years, same time, in 2020, and large stimulus and other packages were being announced in the West, and there were some people who said that we are not announcing those big numbers. So now what has happened is when you do that, there are consequences which we have already discussed, high inflation and other issues. And there was a cautiousness. There was this whole effort that we might be getting off the track a little bit, but we want to get back in terms of fiscal responsibility. We want to get back. We want to fight inflation. So that was always there. And because of that, today you are broadly in a zone where you can manage the fiscal, despite some of the global headwinds that are coming. So that has actually helped. I'm sure there would be downsides that can be also pointed out. But, in public policy, it's all about trade-offs. What you think are your most important things, which is important for the short, medium, and long-term interest of the country, and you act accordingly. True. This takes us to our next story, Udyan. In fact, this is more about core sector growth. The combined index of 8 core industries, the ICI, increased by a provisional figure of 3.5% in April 2023 as compared to the index of April 2022. In fact, the production of fertilizers, steel, cement and coal increased in April 2023 over the corresponding month last year. The ICI measures combined and individual performance of the production of 8 core industries: coal, crude, oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity. The final growth rate of index of 8 core industries for January 2023 had been recorded at a provisional estimate of 9.7%, and the cumulative growth rate of the ICI during 2022-23 is reported at a provisional 7.7% as compared to the corresponding period last year. So, Udyan, these are figures coming in. Core growth industries, most of our industries are linked to this. What do you think that they are actually in sync with the first story, which we were talking about, the GDP and our expectations? Absolutely. And Warren, as we go along, what happens is when you measure these figures, you're comparing it with the corresponding period the previous year, or sometimes if you want to be more hard on yourself, you compare it with the previous quarter. All right. Right. So what happened was because there was this whole abnormal situation where things had to be shut down or slowed down. So we had these statistical kinks. Now those kinks are now going away. Now we'll be comparing, it will be more apple to apple kind of comparison, and where you can have a fair idea of what's going on. Sometimes you don't have to take a double deep dive to understand what's going on. So we are now getting into the phase now slowly where in stats the effect of the pandemic, when we're talking about growth, that is going to recede in the background. We're leaving it behind, and then we will have to be forward looking. And that is what it's indicating. Of course, it's indicating a buoyancy, but the question remains that is it going to be sustained? And even if it cannot be sustained, even if we lose a little bit, it should be marginal, as less as possible, so that we can step it up whenever the opportunity comes. Right. उद्यन, अभी हम जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, खासतौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जिनकी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका रही है पिछले अगर कुछ वर्षों में हम देखें तो स्टील की बात हो, सीमेंट की बात या कोल प्रोडक्शन की बात हो, लगातार इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है काम करने के लिए, आगे आने के लिए, और ये क्षेत्र भी ऐसे जिन्होंने एक अच्छा आउटपुट भी हमें दिया है. कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं ये जो बढ़त हम देख रहे हैं ये सिर्फ कुछ दिनों की ही मेहनत का फल नहीं, एक पूरी प्रैक्टिस है इसके पीछे, एक लंबा प्रोसेस इसके पीछे है, और सरकार की जो मानसिकता है खासतौर पे ये देख करके कि हम इस दिशा में आगे बढ़ करके कहां तक लोगों का कल्याण कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप मानते हैं कि ये जो पीरियड चल रहा है इससे भी हमें आगे और भी जाना है? बिल्कुल. और देखिए काफी कुछ जो है, एक हिस्सा जो ग्रोथ का हिस्सा है वो कई लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है कि वो सरकार के स्पेंडिंग की वजह से हुआ है.
अब सरकार की जो स्पेंडिंग होती है, जो खर्चे होते हैं, सब्सिडी में दिया जा सकते हैं, हैंडआउट्स में दिए जा सकते हैं, पर इस सरकार का एक फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रहा है। तो जब आप सड़कें बनाते हैं, पुलें बनाते हैं, तो जितने कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई या मैन्युफैक्चरिंग की जो कोर जो इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे पावर प्लांट पावर एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं, या आप सड़कें बना रहे हैं, या पुलें बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, मूलभूत जो ढांचा है, और उसमें जब आप खर्चा करते हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, जिनके नाम कुछों के नाम लिए आपने, उनका भी ग्रोथ होता है। तो न केवल जो अभी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें, सरकार की स्पेंडिंग की वजह से भी काफी कुछ स्टिमुलस मिला है। मतलब ये स्पेंडिंग हैंडआउट्स नहीं है, सब्सिडी नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक सड़क को आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस बार बार इस्तेमाल करता है, आप और हम जैसे लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, पुलों को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो इनकम जनरेटिंग होता है ओवर मल्टीपल ईयर्स, साल दर साल आपको इनकम एक देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कई बार कंट्रीब्यूशन जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है, और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको एक्सेलरेटर पे पांव दबाएंगे आगे चल के, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सड़कें कम पड़ रही हों या सड़कों में जाम हो रहा होगा, पोर्ट्स ब्लॉक्ड हो गए हों, नए पोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स, नए कंटेनर, आपको एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन के एक्सप्रेस वेज जो कि बन रहे हैं, वो सब तैयार रहें, तभी हम एक वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को पा पाएंगे। Within investing in infrastructure, I think creating railroad projects, we are doing brilliantly, especially in our road network, and communication, which is the key to any progress, is happening. Wanting to draw your attention to job creation, and I know that for us to achieve growth and development in their true sense, do you think we are managing to keep pace, or we need to be a little more, aware to see that employment opportunities need to expand the rate at which we are growing, because otherwise it has other backward, effects. Oh, absolutely. And one has to be very honest and candid about it. There's a lot of hard work that needs to be done, because even if we do, if we service the Make in India, Atmanirbhar Bharat, where we are talking about manufacturing not only for Indian market, but for the global market, you will need lots of qualified manpower. We're not talking about high people just having PhD. We're talking about people who can work in manufacturing jobs. They should be trained, they should be available, they should be accessible, they should be able to live in good conditions, they should be taken care of, treated well, not the kind of conditions that we have seen in some countries. So those things have to be there. And remember, our country is a democratic country. We are an open society. So these things are important. So it's a huge challenge. It's not even a small challenge. It's almost, because India is such a big country, such a large country, its challenges are also humongous. And that is going to be, I'm so glad you pointed this out. It's going to be our next big, challenge to be overcome. Because you can put up a plant, but if you don't have human beings, people, Indians who will be able to, work on those plants, then, it's not exactly adding up. It's not exactly helping the country in a way we would want. We would want income generation to happen, and around those plants there will be other services that will come up. So when a plant you set up, or, establishment you set up, it's not just a single income generation that's happening. There are all allied activities that happen. And that is where it's important. So I'm so glad that you pointed it out, because that's going to be a challenge, and that challenge is already being seen. Some of the companies who have come in, they are working towards surmounting this challenge, and they need it. It's not about people being available. It has to be available at the place where you're putting up a project. So these are challenges that will have to be overcome. Right. और अब आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार की नजर डालते हैं। देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब 0.5% के नुकसान के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 62,600 अंक के करीब बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,550 अंक के स्तर से नीचे आ गया। दोनों सूचकांकों में ये मामूली गिरावट वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 347 अंक यानी कि 0.55% लुढ़ककर
62,622 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 99 अंक यानी कि 0.53% की सुस्ती के साथ 18,534 पर बंद हुआ। उधर व्यापक बाजार की हम बात करें तो मिड कैप सूचकांक आज 0.55% के फायदे में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की बढ़त दर्ज की गई। Key domestic indices today ended with marginal losses of about 0.5%. The Sensex at the Bombay Stock Exchange finished near the 62,600 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled below the 18,550 level. Both indices fell amid negative cues from global share markets. The Sensex declined 347 points or 0.55% to finish at 62,622. The Nifty also depreciated 99 points or 0.53% to end at 18,534. In the broader market at the BSE, the mid-cap index accelerated by 0.55% and the small-cap index also added 0.7%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 11 firms appreciated while 19 declined. Bharti Airtel climbed 4.8% and Asian Paints was 1.75% up. Tech Mahindra rose 1.7%. On the other hand, Axis Bank declined 2.45%. State Bank of India fell 2.1% and HDFC Bank slipped 2%. In sectoral indices at the BSE, 12 sectors logged gains, while 8 witnessed losses. The telecom index rose 2.2%. Consumer durables, realty and the tech sector added 0.7% each. On the other hand, energy sector declined 1.2% and the metal sector was 1.15% down. Utilities and oil and gas both slipped 1% each. The overall market breadth was negative as shares of 1,717 companies rose while 1,796 companies declined. A total of 132 shares remained unchanged. Udhayan, we've seen a strong, market last week and this week with the market, automatically doing a correction but a marginal one and more or less stabilizing at these levels. What do you think is the future? Do you think that days of volatility are, that acute volatility which we used to see, a very jittery and a very easy to excite or a depressed market, have they gone or is this just a phase? Well, next couple of days are important because I think markets will be looking at what happened to the debt ceiling tentative agreement that has been reached in the US. That's going to be a very important development that we'll be seeing. The voting is going to happen in the US tomorrow in the Congress, and then probably a couple of days later it's going to happen in the Senate. It has to be this has to be sealed by 5th. That's my understanding. So the markets are going to be looking at it the moment that information comes in that it has got passed, which it seems will get passed, but with a little bit of an exciting to and fro's, then you might expect a kind of a relief, kind of a rally or relief kind of reaction in the market. But the market is looking out for that. Now, that's number one. And then the other important development, there's going to be an inflation data print coming out, inflation figure that's going to be coming out in the US. That's going to determine Fed's action in June. So these are some of the two developments. Because US and US capital plays such an important part in global markets, right, including India. So these are two very important developments that we will be looking at. Okay. उद्यन, आज की अगर हम बात करें तो आज आईटी सेक्टर और रियलिटी और फार्मा सेक्टर में काफी हमें इस तरह के बदलाव देखने लगे जो कुछ दिनों से नहीं हो रहे थे। आज चौथा बिजनेस के लिहाज से अगर देखें तो चौथा दिन आज था जिसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और बिल्कुल आपने ये भी बात कही कि जो वैश्विक रीजन है वो कहीं ना कहीं मैटर जरूर करते हैं, लेकिन भारतीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में ऐसा शायद इस मंथ के लास्ट डे पर आज जो था उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज कहीं ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, इसमें आज बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। MSCI इंडेक्स है, तो भारतीय कुछ शेयर्स में वहां पे फेरबदल हुई है। तो जब आप फेरबदल होती है MSCI इंडेक्स में, जो कंपनियां बाहर जाती हैं वहां उनके शेयर से पैसे बाहर निकलते हैं और जो नए ऐड होते हैं उनमें जाते हैं। तो वो एक फेरबदल का सिचुएशन था। फिर रिलायंस जो कि इम्पोर्टेंट प्लेयर है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक इम्पोर्टेंट है, वहां पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। फिर आपकी
स्टेट बैंक में शायद कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट के बारे में बातचीत हुई है जी। तो ये कुछ डेवलपमेंट हैं जो ऐड कर देती हैं। प्लस ओवरऑल आप जब काफी मूवमेंट होता है तो आप पॉज करते हैं। तो हम डोमेस्टिकली आज जो खबर आई है जीडीपी की, वो कल टेक्निकली तो मार्केट को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, पर क्योंकि डेट सीलिंग का मुद्दा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर ग्लोबल सेंटिमेंट वो ओवरराइड करता है, उसको लेकर लोग चिंतित होते हैं या बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, उसके हिसाब से हमारे मार्केट्स के सेंटिमेंट को भी कल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जून का जो महीना होता है हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, खासतौर पे मानसून के लिहाज से कई सारे परिवर्तन हम देखते हैं। जून के महीने में शेयर बाजार में उथल पुथल हमने बहुत देखी बीते वर्षों में, और ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। खैर, अब हम एशियाई शेयर बाजार की ओर बढ़ते हैं तो एशियाई शेयर बाजार लगातार दूसरे महीने में गिरावट की ओर बढ़े, यहां तक कि जापान के निक्केई की रफ्तार भी थम गई। कोविड महामारी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की चीन की औद्योगिक गतिविधियों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस बीच हांगकांग के हिंगसेंग में आज 2% की गिरावट आई। जापान का निक्केई सूचकांक 1.45% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.9% की गिरावट आई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.35% नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था। फ्रांस का कैक 0.6% सुस्ती में रहा। जर्मनी का डेक्स 0.4% नीचे आ गया और लंदन का FTSE 100 0.1% लुढ़क गया। And now let's take a quick look at the U.S. markets and oil prices. Stocks on Wall Street closed mixed yesterday, pressured by worries about U.S. lawmakers opposed to a deal to raise the debt ceiling, but supported by another surge in Nvidia shares that lifted the chipmaker into a $1 trillion company. The Nasdaq Composite Index rose 0.3%, while the Dow Jones Industrial Average declined 0.15%. The S&P 500 traded flat. Oil prices fell more than 2% today as weak data from top oil importer China raised demand fears. In intraday trade, Brent crude was trading at $71.84 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $67.58 per barrel when reports last came in. रुपए पर नजर डालते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 72 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 104.45 पर था। और अब हम सोने की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज जून के वायदा कारोबार वाले सोने के भाव में 116 रुपए की तेजी आई। ये 60,062 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। अंतिम समाचार मिलने तक जुलाई अनुबंध वाली चांदी 309 रुपए की वृद्धि के साथ 71,352 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,979.20 प्रति औंस पर था और चांदी तेजी दर्ज करते हुए $23.40 प्रति औंस पर थी। उज्जैन जी, बाजार की स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे और गोल्ड की जो स्थिति है इस पर क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, अभी तो जो आपने जो खबरें पढ़ी हैं वो काफी कुछ डॉलर के मूवमेंट के साथ लिंक्ड है और डॉलर के साथ हमेशा एक रिलेशन तो रहता है। डॉलर में जब ज्यादा मांग होती है तो सोने से हट के डॉलर की तरफ जाते हैं। तो डॉलर जिस तरीके से मूव करेगा आने वाले कुछ दिनों में, उससे सोने के डिमांड पे असर पड़ सकता है और वो हमेशा जैसे पड़ता है। इसके अलावा अगर वैश्विक पॉलिटिक राजनीतिक स्थिति जैसे यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है या दूसरी जगह वहां पर अगर संघर्ष होता है या कोई लार्ज स्केल बड़ा बदलाव नहीं देखता है तो टेंशन आता है तो वहां पर गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है और डिमांड भी। जी, उद्यन जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely, thank you, Udyan, for taking time out to be with us. And now, before we close, a reminder of the headlines. India's GDP registers a growth of 6.1% in the January to March quarter. Index of 8 core industries rises by 3.5% in April 23 as compared to the previous year. And key domestic indices log losses of 0.5%. Sensex finishes near 62,600 points. Nifty settles below the 18,550 level. And that's it in this edition. Namaskar. Namaskar. Market Tantra.
Market Bhakra.